क्वेश्चन, Salesforce मार्केटिंग क्लाउड में क्या होता है, what we do in Salesforce marketing cloud, or why company enroll themselves in Salesforce marketing cloud. So guys, Salesforce marketing cloud में क्या होता है इसके ऊपर बहुत डाउट है सबको कि जो भी डिजिटल मार्केटर्स होते हैं और यू कैन से जो भी कोई प्रोफेशनल है जो कि Salesforce एसोसिएटेड नहीं है, उनको लगता है कि यहाँ पे एड्स रन होती है लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम। उनको लगता है कि यहाँ पे कुछ फेसबुक, गूगल के जैसा कुछ एसईओ होता है जहाँ पे हम ब्लॉग्स लिखते हैं, रैंक करते हैं, कुछ मतलब दे आर काइंड ऑफ सिमिलर कि हाँ ईमेल भेजते हैं, कुछ उनका ऐसा वो रहता है, मतलब दे हैव अ डायलेमा कि इसमें क्या होता है। तो Salesforce मार्केटिंग क्लाउड इज अ प्रोडक्ट डेवलप्ड बाय Salesforce जहां पे बड़ी कंपनीज टेक्निकल मार्केटिंग करती हैं। कंपनीज डू टेक्निकल मार्केटिंग। नाउ व्हाट इज टेक्निकल मार्केटिंग, हम एक छोटे से एग्जांपल से समझेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड Amazon। सो गाइज, Amazon के पास एप्स हैं, वी ऑलरेडी हैव Amazon एप्स इन आवर फोन। उसके बाद Amazon एक ब्राउजर पे भी ओपन होता है, वी आर एबल टू ओपन amazon.com और amazon.in ऑन द ब्राउजर। सो Amazon के पास मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स है जहां पे वो कस्टमर्स को होस्ट करते हैं और कस्टमर्स को प्रोडक्ट्स बेचते हैं। तो आप यू कैन गो ऑन देयर ऐप ऑल्सो, यू कैन लॉग इन टू देयर वेबसाइट ऑल्सो, और आप वहां पे अपने हिसाब से काम कर सकते हो। बट आपने देखा है कि कभी Amazon एड रन कर रहा है? Amazon कभी आपने देखा कि मतलब जितनी एड्स रन होती है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, जितनी एड्स रन होती हैं गूगल पे, यूट्यूब पे, यू कुछ आप लोग में से कोई डिजिटल मार्केटिंग में भी होंगे, सो यू माइट बी रनिंग एड्स फॉर योर क्लाइंट्स। सो हैव यू ऑब्जर्व कि Amazon कितनी एड रन करता है? मेरे हिसाब से तो Amazon तभी एड रन करता है व्हेन दे हैव टू लॉन्च अ प्राइम डे सेल, और some special occasions like we get in Republic Day, we get Amazon sales ads, Amazon run, we see Amazon running ads when there is a special festival like Eid, okay, Holi, Diwali, Christmas। बट Amazon इतनी बड़ी कंपनी है तो वो बार बार एड्स रन क्यों नहीं करती है? If you see a small business, like people whose skill is a business, it is not as giant as Amazon. So हमको इन people whose skills हमको बार बार अपनी एड्स रन करनी पड़ती हैं, बिकॉज हमारे पास कस्टमर बेस इतना नहीं है। अगर हमारे पास कस्टमर बेस अच्छा खासा हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, हम उनको एड्स की जगह दूसरे चैनल्स पे इंगेज कर सकते हैं, जो कि क्विक एंड इफेक्टिव चैनल्स एंड लेस कॉस्ट में हमको मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, Amazon पे अगर आप एक बार साइन अप करने गए हो, व्हेन यू हैव साइंड अप ऑन Amazon, वो आपका साइन अप डिटेल्स ले लेगा। दे विल टेक योर फर्स्ट नेम, दे विल टेक योर लास्ट नेम, दे विल टेक योर ईमेल एड्रेस, दे विल डू एवरीथिंग। उसके बाद वंस यू आर देयर इन देयर सिस्टम, जब आप फॉर्म भरते हो तो यू प्रोवाइड अ कंसेंट दैट you allow Amazon to send you marketing communications. So once you flow to their system, so Amazon will not waste waste their money running ads on digital platforms. Rather, they could engage you in some easier on easier channel. For example, email. They can do WhatsApp. ठीक है? They can, they have app. They can send you push notification to alert you. तो सबके पास फोन है, जैसे ही व्हाट्सएप नोटिफिकेशन आती है वी सी कि भाई व्हाट्सएप पे कौन है, किसने मैसेज किया। जैसे ही कोई ऐप की नोटिफिकेशन आती है, Amazon पुश नोटिफिकेशन भी भेजते हैं। जैसे आपने अबंडेंट कार्ट किया, यू वेंट एंड अबंडेंट द कार्ट। अबंडेंट कार्ट मतलब कुछ प्रोडक्ट आपने कार्ट में डाला एंड देन उसके बाद आपने उसको चेकआउट नहीं किया, आपने उसको परचेज नहीं किया, तो यू अबंडेंट दैट कार्ट, वो प्रोडक्ट कार्ट में ही पड़ा रहा। तो उसकी आपको नोटिफिकेशन आती है कि योर प्रोडक्ट इज स्टिल इनटू द कार्ट।
So what Amazon does is once they spend money to gain more followers, your कोई भी company, when they spend digital ads to get customers, new customers, they rather work on other channels to predict more about that customer, the existing customer, and customize their marketing communications to keep them engaged. So if I went and I signed up as a new customer, then I went and made some history on Amazon platform, like I went and I abandoned a cart. So Amazon will not show me an ad, rather it would send a push notification after 15 minutes that your cart is abandoned. So the ability to read the behavior and take next best action. Here the behavior was I went and I abandoned the cart, and then the next best action Amazon took was after 15-20 minutes of inactivity, Amazon sent me an email reminder. So this ability to predict, to read the data of the customer, to predict and take next best action, the next best action in form of communication, okay, that is known as data driven marketing. और यही होता है Salesforce Marketing Cloud में. In Salesforce Marketing Cloud, what we do data driven marketing. So in Marketing Cloud, we try to store the data of the customer based on different, the data varies business to business. So Amazon is an e-commerce company, तो उनके प्लेटफॉर्म पे जो भी आप करोगे, जो भी सर्च करोगे, the histories you search and all, what they do, वो आपका डेटा बनाते रहेंगे, वहां पे डेटा स्टोर करते रहेंगे, and when they have to take action, they will read your data and take next best action. Whether you abandoned a cart, they would send you a push notification. If you haven't still purchased anything from the Amazon, what they will do, they will send you a detailed email जहाँ पे you will see your products which you have abandoned and some more suggestions as well, like similar product suggestions. They would enroll you on WhatsApp. If you still are not going to purchase, or if they still detect that you haven't purchased, what they will do, they might send you a 5%, 10% offer via push notification or email or WhatsApp, and they will insist you to buy. So this is what companies do in Marketing Cloud. When there is large scale of customer data, and that customer data generates large scale of behavioral data, like I went to cart and I did some action, that was the behavior which I showed to Amazon as a customer. So large scale पे behavioral data अगर हो, तो then companies use Salesforce Marketing Cloud to maintain those behaviors and to take next best actions. The example which I gave is a simple example, but you will understand that when you will understand when you start working with Salesforce Marketing Cloud ये कैसे होता है. So it is under technical marketing, क्योंकि digital marketing what it will majorly do, it will bring you customers, it will bring you leads. You ran ad, you got new lead, but a customer life cycle is big. You sold one product and then again you have to sell another product to him after few days. So you have to maintain a customer relationship management. You don't have to let your customer go after one attempt. You have to maintain a longer relationship. You have to make sure your customers are actively engaging on your platforms, like on Amazon or other platforms like Netflix and all you are using. If you don't use Netflix for 2-3 days, they send push notification. Or if you have seen some food delivery apps like Zomato, Swiggy, so they try to send you push notifications time to time so that you come back to their platform. So instead of running ads, they use technical marketing with the help of Marketing Cloud. They maintain customer data, they maintain customer behaviors, they analyze those behaviors, and they write automations, journeys to take next best actions. See, these all are happening based on the actions predefined in the Marketing Cloud. So that is why Marketing Cloud is most popular marketing automation platform
across multinational companies, medium enterprises. And if you are already aspiring to become a Salesforce Marketing Cloud professional, then please stay tuned with other videos I am going to post. Stay tuned with People Who Skills. Keep on checking our upcoming Salesforce demos, and I'm sure it will help you a lot. Thanks, guys. Have a good day.